So yesterday we have discussed about the various theory pertaining to origin of universe as well as solar system. I have provided the notes also. The last one which we discussed was Big Bang theory. So how everything arises from nothing. There was nothing and everything came, and that is what matter, energy, light, time, space. So how these things came with time after this Big Bang theory or after this Big Bang, what were the process? This process was actually explained by Peter Higgs. So in today's class, we will try to discuss the process, that how the primordial material, which was basically the magma, which was basically the hydrogen and helium, how it was. So in order to understand that, today's class will discuss the details. So let's begin with. So as I told you in the Big Bang theory, let me share the notes first. So what happened? According to Big Bang theory, the assumptions proposed by George Lemaitre, we have discussed it already. So process of formation, is it visible to you? Yes, sir. Process of formation of matter from nothing. So as we all have this idea, there was a singularity, and from this singularity, which was a tiny singularity, and everything was confined within it. Before this singularity, there was nothing and everything confined within this tiny ball, which was of infinite gravity, infinite density. An infinite density. And there was an explosion, and everything which was confined within it released, and expansion was started. Expansion was started. And in the process, energy was released. And within fraction of second, some part of energy get converted into mass, and God particles were created. Can it be happened? Yes. If something is moving at a faster rate of light, then the energy can be converted into mass, and we know it, E is equal to mc square. This is Einstein's mass energy equation, where E represent energy. So at that very time, expansion was very rapid. M represent mass, and c is velocity of light. And if this is the case, so every time this God particle or Higgs boson will be produced, it is also
established by Large Hadron Collider experiment. Large Hadron Collider experiment in 2012. So we have discussed this, कि Peter Higgs defined how the process was there. So what happened? This God particle were created. God particle, अब क्या करेंगे बच्चे? God particle are that we call Higgs boson, which we call Higgs boson. Recombine to form quarks and neutrino. Quarks and neutrino. These were the particles generated because of combination of God particle. And what happened next? Quarks and neutrino recombined to form electron, proton, and neutron. Electron, proton, and neutrons were formed. Fine. And you know, electron, proton, and neutron, these are fundamental subatomic particles. Subatomic. बच्चे आप देख रहे हो कि बाकी जो थियरीज हैं वो कह रही है सुपरनेचुरली क्रिएटेड गैसियस नेबुला, और देयर वाज नेबुला, और सम celestial dust was there. But Big Bang theory talks about how those substances were created. It was not a supernatural creation, rather it involved a process. Fundamental subatomic particle, where you know electrons, they are negatively charged. They have negative charge, unit negative charge, and they are almost massless. They are massless. While proton, they all are positively charged. And they contains mass, and likewise neutron. It is what? Neutral. No charge is there, but it is also containing mass. Fine. Now what happened? When these subatomic particles were formed, neutron and proton recombined to form nucleons. Nucleons, and they become the part of nucleus. They form the nucleus of the atom. So nucleus of the atom was formed, and it contains proton as well as neutron, and it becomes positively charged. Nucleus get positively charged, and it attracted the electrons, which is what? Negatively charged. So electron get attracted, and it is negatively charged. Under the electrostatic force of attraction, this electron start revolving around this nucleus very rapidly, and the first nucleus was formed, first atom was formed. And the first atom was helium. Helium was formed. है ना बच्चे? Although हाइड्रोजन क्या है? सिंपलर एटम है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बने, हीलियम बना. तो क्या कारण रहा होगा बच्चे हाइड्रोजन न बनने का? कुछ अंदाजा लगाइए. जीएस की क्लास में मैंने कवर किया था. Why the first atom was formed was helium? Because helium is thermally stable. Yes, very good. It is thermally stable.
thermally stable. Means when this formation were taken place, temperature was too high. Temperature was too high. So at high temperature, hydrogen cannot stabilize. Fine. That's why the first atom which was formed was helium. And it took almost 300,000 years from Big Bang. From Big Bang. पहला एटम बनने में 300,000 साल लगते हैं बिग बैंग के बाद पहला एटम 300,000 साल। अच्छा ये याद रखिएगा, ये जो डिजिट्स हैं कहीं 300,000 साल, कहीं 350,000 साल, कहीं 380,000 साल लिखे गए, क्योंकि कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं। तो जिसको जो मन में आया उसने वो लिख दिया है कि इतना प्रोसेस लगा। सो अप्रोक्सीमेटली दीज डिजिट्स आर नॉट गोइंग टू मैटर बिकॉज इट्स नॉट अ हिस्ट्री, इट्स ओल्डर देन द प्री हिस्ट्री। फाइन। तो यहाँ डेट वगैरह मैटर नहीं करती। हाँ, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या हुए ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है। अब क्या होगा बच्चे, एटम्स बन रहे होंगे एंड टेम्परेचर गेटिंग कूल। Temperature of the system, temperature was decreasing। और जब टेम्परेचर इतना हो गया कि हाइड्रोजन बन सके, सो मोर हाइड्रोजन वेव। तो आप ही बताओ बच्चे, जो एक्सपेंशन हो रहा था, जहां से सिर्फ एनर्जी निकली थी, आज उस एक्सपेंशन में हीलियम और हाइड्रोजन दोनों आ गए, और वो हॉट भी है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड दे आर एक्सपेंडिंग। सो इज इट नॉट द गैसियस नेबुला? गैसियस नेबुला। तो जहां से बाकी की थियरी शुरू होती है, इस पर्टिकुलर फेज से, चाहे इमैनुअल कांट को देखो, लाप्लास को देखो, या फिर बाकी लोग तो तारे बना चुके हैं, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस वाले जो भी हैं, है ना, डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस। तो तारे कैसे बने, उसके बाद क्या हुआ वो तो समझ में आता है, लेकिन तारे बने कैसे, उसके लिए ये हाइड्रोजन और हीलियम कैसे बने, ये बात केवल और केवल बिग बैंग थियरी ही बताता है। So how Big Bang theory is what superior as compared to contemporary theory? I made my point clear to you. So now the gaseous nebula were formed. That means the gases are formed and they are containing, these gases are containing mass. So obviously if the mass will be there, so the mass has a property and that is what? Gravity. अब ग्रेविटी के कारण बच्चे जरा सा इमेजिन करिए कि यहाँ से सब कुछ एक्सपैंड हो रहा है और दूर दूर जा रहा है, और दूर दूर जाने की प्रक्रिया में एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू mass and God particles were created. God particle recombined to form quarks neutrino. Quarks neutrino recombined to form electron, proton and neutron, and electron, proton and neutron recombine to form atom. ये सब कुछ इसी एक्सपेंशन की प्रक्रिया में ही हो रहा। So the expansion was going on, and simultaneously the expansion was going on in all direction, and the process was also taking place. So the energy was released, and some part of energy get converted into mass. And the atoms were formed. And now this is what expansion of gaseous nebula. This is what gaseous nebula is expanding. Containing hydrogen and helium. What is the specialty of this gaseous nebula? More hydrogen and less helium. Somewhere it has been written more than 90% hydrogen, less than 10% helium, but it is a debatable aspect. But do remember, more hydrogen
एंड लेस हीलियम। आज भी अगर सूरज पे देखें तो मोर देन 70% इज व्हाट, हाइड्रोजन, है ना, एंड 26% इज हीलियम। सो आप देख पा रहे हैं कि मोर हाइड्रोजन, तो सूरज में जब ये कॉम्पोजिशन है, तो जब सूरज नहीं बना रहा होगा तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ज्यादा रहा होगा। So sometime you will find that some of the what you can say astrophysicists of the opinion that hydrogen was more. Some quantify them that more than 10%, more than 90% was hydrogen, and less than 10% was helium. It's okay. Ultimately, what was the composition of gaseous nebula? It was hydrogen and helium. And you know, these gases contain mass, so they occupy gravity. अब क्या होता है बच्चे, ग्रेविटी के कारण ये गैसेस आपस में नजदीक भी आने लगते हैं. So there is a process of accretion start. Aggregation of these gaseous nebula have started. And they get aggregated like this. They get aggregated like this. And they clustered in numerous groups. The entire gaseous nebula get clustered in numerous groups, and each cluster get transformed into galaxy. These are the superclusters. Massive clustering of gases have taken place. Because of its own gravity, gases get attracted and they form these groups. And they are expanding with respect to each other. And they are aggregating under the influence of their own gravity. So these are the clusters which are actually expanding. एक दूसरे से दूर भी जा रहे थे और हाइड्रोजन और हीलियम पास पास भी. So now this is a gaseous nebula which actually form billions of such clusters. Billions of such clusters were formed. Billions of such clusters were. And do remember, each cluster means group of aggregation of gas. No? And each cluster, each supercluster. Why supercluster? क्योंकि बहुत सारी गैसेस हैं बच्चे, मास बहुत ज्यादा है. Each supercluster get transformed into गैलेक्सी. हर सुपर क्लस्टर किसमें बदला? गैलेक्सी में बदला. और गैलेक्सी क्या होते हैं बच्चे? वन गैलेक्सी इज कंटेनिंग बिलियंस ऑफ स्टार. वन गैलेक्सी is containing billions of stars. Billions of stars, isn't it? So this is what how the galaxy were formed. अब उस गैलेक्सी बने तो उसमें स्टार्स बनेंगे. गैलेक्सी के और भी कंपोनेंट कैसे बनेंगे, इस प्रोसेस को भी सीखते हैं बच्चे. सो यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं? Everyone understood what I mean to say? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, आगे चला जाए. Acha, these topics are equally important for your GS also. In GS classes, we have covered it in a depth also. But हाँ, यहाँ थोड़ा और ज्यादा हम लोग इसको कवर करेंगे बेहतर ढंग से. अब हमें देखना है बच्चे कि गैलेक्सी बनी है, तो गैलेक्सी क्या है ये जाने. गैलेक्सी इज व्हाट? ग्रुप ऑफ स्टार्स. Group of stars constitute galaxy. And how many stars are there? Billions of stars are there. And a typical galaxy consists of a center that is occupied by black hole. And there are three
3 arms, or you can say zones, 3 arms of galaxy revolving around the central black. Okay. And each arm contains star. Each arm contains stars. The outermost arm contain protostar or new star, or we call it embryo star. This is the outermost. Contain protostar, new star, or embryo star. Sometimes proto-sun is also term given to new star, proto-sun. Fine. The second arm or middle arm contains mature star. Middle arm contains mature star. For example, we have a mature star. Our sun is mature star. Proxima Centauri. Proxima Centauri, or that is also called as dog star, which is another mature star. You can say nearest star from the sun. It's the nearest star from the sun. From the sun. Almost 4.2 light year. 4.2 light years away from the sun. Away. 4.2 light year away from the sun, you can say, our Earth, क्योंकि astronomical unit light year के हिसाब से तो बहुत छोटी हो गई, है ना? So it is the nearest star from the sun, from the Earth, also from our solar system, basically Proxima Centauri solar system, or it is also called as dog star. And this is the brightest star in the sky. Brightest star in the sky. ये 4.2 लाइट ईयर क्या है बच्चे? लाइट ईयर is a measure of distance. Light travel distance in 1 year is what equal to 1 light year, and it happened to be 9.46 into 10 to the power 12 kilometer. ठीक है? This is equal to 1 light year. याद रखिएगा, 1 light year. 1 astronomical unit is what equal to average distance between Earth and the sun, and it happened to 150 million kilometer. Okay, another unit of distance is what? 1 parsec, and 1 parsec, it is even bigger unit, is equal to 3.26 light year, है ना बच्चे? So, अगर आपने आज प्रॉक्सिमा सेंचुरी को देखा, आज मतलब आज डेट है 15 अगस्त, है ना बच्चे? 15 अगस्त 2025. तो अगर आज आप प्रॉक्सिमा सेंचुरी को देख रहे हैं, तो वो असल में 2021 में जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी रहा होगा उसको आप देख रहे हैं.
क्योंकि वहां से लाइट आने में 4.2 ईयर्स लगे। तो आज जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी दिख रहा है वो आज का नहीं है, आज का तो आप देखेंगे 4.5 साल के बाद। वो 2021 में जैसा था प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जैसा दिख रहा था, वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी आप देख रहे हैं। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस मच डिस्टेंस। सो इट इज द नियरेस्ट स्टार। आप इमेजिन करें कितना ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ठीक है। द सेकेंड आर्म आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल आर्म दैट कंटेन्स मैच्योर स्टार लाइक आवर सन, और हम इसी के सोलर सिस्टम में है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी नियरेस्ट स्टार। एक और है बच्चे पोलैरिस, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। पोलैरिस, इसे आप ध्रुव तारा कहते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैच्योर स्टार, मैच्योर स्टार। एंड इट इज far away from the earth, far away from the earth, not able to create, yes, far away from the earth, that it remain responding stationary with respect to the tilted axis of the earth. So this is the tilted axis of the earth. Here it is the vertical axis, and earth is tilted by 23.5 degree. This is north pole, here it is south pole. So Polaris is far, far away from the tilted axis, and it remain above north pole, and we use this Polaris Dhrotara for determining the direction. So normally हम कहते हैं ना sun rises in the east, but डायरेक्शन का डिटर्मिनेशन हम ध्रुव तारे से करते हैं, क्योंकि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड देयर इज साउथवर्ड ट्रांजिशन एंड नॉर्थवर्ड ट्रांजिशन, सो इट्स नॉट एग्जैक्टली फाइन. There will be some date upon which sun is exactly in the east, but direction के calculation के लिए we are using this ध्रुव तारा, north, south, east, west. So this north is what the main direction, which is actually governed by pole star or Polaris, pole star or Polaris star. Or north के just opposite is what south. At right angle to north is east, at right angle left to north is west. So this is what the direction were assumed on the earth. So this is what mature star Polaris. Fine. The third arm of the galaxy, third arm of the galaxy, our outermost zone. Ulta ले गया. First, this is outer arm we talked about now. Outermost arm, then middle arm, and this is the inner arm. The third arm is innermost. Please correct it. It is the innermost fine, innermost zone. That is what closest to the central plan. Central, closest to the central plan. Fine. Our innermost arm contains older stage of stars like older stage of stars like, for example, white dwarf, black dwarf,
We have neutron star, etc. So these are close to the central black hole and the inner. And the galaxy has, means it is of any size. It can be irregular in shape, irregular shape galaxy. It can be spiral. It can be elliptical. Or it can be circular. Galaxy का shape कुछ भी हो सकता है. But what is clear that there will be a center occupied by black hole. And there will be 3 concentric zones containing different type of stars. Fine. So there will be center occupied by black hole. The inner arm, first, second, and third. First, second, and third arm. And this entire galaxy is revolving around this black hole in counterclockwise direction. Counterclockwise direction. ठीक है बच्चों? Counterclockwise. So, if you see this galaxy, typical structure of galaxy, so you'll find there is a center. And the center is occupied by black hole. Let me draw this for you. First arm, second arm, एक और बनाना पड़ेगा. There will be third arm. Goes like this. So these are representing concentric rings, and the center is occupied by black. This is first arm, second arm, and third arm. Likewise here also. And the outermost arm contains protostars. Protostars, smaller stars. They are just formed stars. These are the just formed stars. अभी अभी जो बने हैं ये वो तारे हैं बच्चे. इनका निर्माण हुआ है अभी. These are the protostars studied in the outermost arm. Then we have mature star. We have mature star that is present at the second arm. Mature star, it can be polar star, it can be Proxima Centauri, it can be our sun also, isn't it? So these are the example we have discussed. Like we have polar star also. Right. These are mature stars. Sometimes mature stars are too large, very large. It's much, much bigger than the sun. Can be possible 100 times bigger than the sun. 1,000 times bigger than the sun. So there are mature stars also. And that is what giant stars, right? And the innermost arm contains white dwarfs. Let me show you this white dwarf with color so that it is visible. So these are white dwarfs, and the closer to the black hole there are black dwarfs, right? Closer to the black hole there are the black dwarfs. Yes, we have neutron star also. Tiny neutron star, very small neutron star. When large star undergoing supernova, there is formation of neutron star.
So we'll find all these arrangements over here. So we can easily see the arrangement. Like here we have embryo star, embryo star. These are the mature one, mature star. And this particular star is mature giant star. Giant star means बहुत बड़े तारे, size इनकी बहुत बड़ी, giant star. They are mature giant star. Here the visible one is white dwarf, white dwarf, and the black one, which is, I tried to show that they are not visible, they are black. And the center is occupied by black hole. Everything is revolving around this black hole. In which direction? Counter clockwise direction. Counter clockwise direction. Entire galaxy revolve around the central black hole in counter clockwise direction. And this direction is actually observed from the Earth, North Pole. हम कहाँ से देख रहे हैं बच्चे? So this is the northern hemisphere, North Pole. Northern hemisphere में most of the countries are there. तो हमारे telescope कहाँ है? Northern hemisphere में है. That's why each observation is with respect to North Pole. So this anti-clockwise direction rotation is with respect to North Pole, because Northern hemisphere is what countries are there where exploration is going on. Seat of power and seat of knowledge. Right? So this is a typical structure of a galaxy where you will find that the center is occupied by black hole, and there are stars, different types of stars, stellar dust, and there is continuous formation of a star taking place, formation of solar system taking place. These all are going on. So the supercluster which I talked about, this one supercluster get transformed into one galaxy containing the billions of stars. How this galaxy looks like? Now we have understanding that galaxy has a concentric 3 arms. Center is occupied by black hole, and all the stars, different types of stars, are revolving around this black hole. Is it okay to everyone? ये बात समझ में आ गई? एक typical structure galaxy का कैसा है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Is it okay to everyone? ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा बच्चे? हमें सीखना है कि ये गैलेक्सी कैसे बनी. गैलेक्सी बनने का मतलब कि हाउ द स्टार्स वेयर फॉर्म्ड, और एक चीज और जानना है कि ये ब्लैक होल कैसे बने. ठीक है. सो आइए चलिए सीखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दीज ब्लैक होल्स. ब्लैक होल होते क्या है? सो दे आर द प्लेस ऑफ मैसिव ग्रेविटी. मैसिव gravity, that is infinite gravity. Infinite gravity occupied the center of the galaxy, present at center of the galaxy. One black hole, on an average, one black hole is equal to millions to billions of solar mass. यानी एक ब्लैक होल जो बना है वो मिलियन से बिलियन तक के सूरज के कंसंट्रेशन से बना है. मिलियंस टू बिलियंस ऑफ सोलर मास. कहते हैं जो सबसे बड़ा ब्लैक होल, उसका नाम मैं बोल रहा हूं, द लार्जेस्ट ब्लैक होल
largest known black hole contains approximately 600 billion solar mass. 600 billion solar mass. ऐसे ब्रैकेट में रख लीजिए. So this is what the black hole. अब बने कैसे बच्चे? जब gaseous mass concentrate हो रहा था, बन रहा था. So what happened? This is what the entire galaxy gaseous mass. So obviously the center is what? Feeling lot of pressure, load of these gases. These are the gases. And here it is the center. So obviously center is what? Dense. So it has more gravity. All the gases are actually attracted towards those gases. And hence, due to gravity, the center get crushed. And due to massive crushing, these atoms get transformed into nuclei, and further crushing transform them to the black hole. So the center of the galaxy get transformed, directly transformed into black hole under massive gravitational force. ठीक है बच्चे? So ये गैसेस हैं, हाइड्रोजन है और हीलियम है. लेकिन जो गैलेक्सी का सेंटर बनने वाला है, उस पर सबसे ज्यादा ग्रेविटी होगी, चारों तरफ से उसे दबा दिया जाएगा और उसके एटम पहले न्यूक्लियस में क्रश होंगे, फिर न्यूक्लियस को फर्दर क्रश किया जाएगा और फिर वो डेंस ब्लैक होल में बदल जाएगा. दिस इज हाउ द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी इज ऑक्युपाइड बाय ब्लैक होल. एंड ब्लैक होल आर सो स्ट्रॉन्ग that it can distort the time and space continuum in a way that nothing can pass through it. तो अगर आप देखें स्पेस और टाइम की चादर को, स्पेस टाइम कंटिन्यूम, स्पेस टाइम कंटिन्यूम. अब यहां अगर कोई ब्लैक होल है बच्चे, तो इस स्पेस टाइम के कंटिन्यूटी को इस तरह से डिस्टॉर्ट करता है कि कोई चीज अगर इसके चारों तरफ इसके पास जाएगी तो पहले तो इसके चारों तरफ घूमना शुरू करेगी और इस गड्ढे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगी. घूमते घूमते क्या होगा बच्चे? ये धीरे धीरे इसी ब्लैक होल में समा जाएगी. तो अगर ये सेंटर ऑफ गैलेक्सी आप मानते हो, दिस इज द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, तो ये जो स्टार्स हैं उसके चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि इसने स्पेस टाइम कंटिन्यूम को एक गहरे गड्ढे में बदल दिया. And then this star is revolving around it in anti-clockwise direction and changing their what you can say stage, and ultimately get engulfed by this central black hole. This is the massive gravity. Okay, at the center. So the black hole is so strong that it has distorted the space-time continuum, and everything, the entire galaxy is revolving around it and continuously getting engulfed by this black hole. और एक दिन ऐसा आएगा कि सारे तारे जो है अपने अपने ओल्ड स्टेज में होते हुए अंत में इसी ब्लैक होल में समा जाएंगे, है ना? So this is what distortion, and there is a point which is called as event horizon. Event horizon of this black hole, which you can consider as a mouth of the black hole. इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इवेंट होराइजन. वी कॉल इट इवेंट होराइजन. अब इवेंट होराइजन को मैं सामान्य भाषा में माउथ ऑफ द ब्लैक होल कह देता हूं, हो सकता है ये आपको किताब में न मिले. सो इवेंट होराइजन इज अ प्लेस बियॉन्ड which nothing can be written. Nothing can be written. कुछ भी वापस नहीं आता. Even light cannot pass through it.
इवन लाइट कैन नॉट पास थ्रू, लाइट भी वापस नहीं, ये होता है ब्लैक होल। एंड इट इज व्हाट, एंडलेस, इट इज एंडलेस, वेयर द प्लेस, कहाँ पे ग्रेविटी है वो समझ में आता, दिखता भी नहीं है बच्चे। इवन लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, तो इट इज नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, टोटल डार्क। टू 2019 में आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी, या अभी भी आपके पास वो न्यूज हो। 2019 में मेजियर 87 गैलेक्सी है, इसका ब्लैक होल का फोटो लिया गया था बच्चे। तो वो मैं फोटो दिखा देता हूँ। सो यू विल फाइंड दैट it is illuminated photograph and the center of it is basically the black hole. So let me show the pic. Of black hole. Picture of black hole. Is that bigger black hole is ton 618, कुछ ऐसा नाम है। Picture of black, क्यों नहीं रहा? Let me share. So this is what Messier 87. This is the picture of black hole. Is it visible? Yes, sir, it is visible. Huh? Visible. So try to see this particular area, the center part. This is basically the black hole, and the surrounding area where you are going to see the light is what? Event horizon. Event horizon. Fine. So this is the center of the galaxy where the black hole is lies, and it distorts the time-space continuum in a way that entire galaxy is basically revolving around this particular. Is it okay to everyone? Yes, sir. हाँ, कोई सवाल है बच्चे? Yes, So this sir. is what a peculiar black hole, where you will find that entire what you can say, stars are revolving around this, and they are completing its life and ultimately become, means they get engulfed inside the black hole. So how this black hole was formed? It was actually the center of the gaseous cloud of supercluster that were crushed under massive gravity, and these gases, which were hydrogen and helium, crushed into nuclei form, and then further crushing lead to or degenerate them into black holes. So this black hole was created under massive gravity, under massive gravity. Fine. Now how the stars were. So you know this billions of stars were formed out of this one galaxy. So let me take this billionth part of this gaseous nebula and let's discuss how the star were formed. Gaseous nebula. The next topic which we are going to discuss is stages of a star's life. तो यहाँ से gaseous nebula से stars कैसे बने इसको सीखते हैं बच्चे. So next topic which we are going to discuss is life of the star. And do remember, still we are discussing the Big Bang. ना मैटर कैसे बना, फिर स्टार कैसे बने, फिर प्लैनेट कैसे बने. तो अगर आप देखेंगे टाइडल हाइपोथेसिस बाय जेफरी एंड जीन्स एंड चैम्बरलिन्स हाइपोथेसिस, वो स्टार बनने की बाद की प्रक्रिया है ना. सो प्लैनेट्स वगैरह बनने की बात तो लोग कहते हैं और थियरीज भी हैं, लेकिन स्टार कैसे बने, मैटर कैसे क्रिएट हुआ, ये बात बताती है बिग बैंग.
So life of the star, the first star which is going to be formed is called as embryo star, or we call it proto sun. Proto sun हमारा सूरज कैसे बना? Let's find it. So as we know that there is hydrogen and helium, this was the gaseous nebula phase. And you know this I was can't the see the boat. क्या हुआ बेटे? The boat. I can't see. Hello, Sir, we are unable to see the board. you are not able to see the board? Yes, sir. Sir, it's the black hole image is in front of the अच्छा अच्छा Screen. अच्छा. Stop sharing, मैंने दोबारा शेयर नहीं किया इसलिए. ये रहा आपका बोर्ड बच्चे. अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? इस गैलेक्सी में स्टार्स स्टडीड कैसे हुए, किस तरह से स्टार बने, भगवान ने ही बनाया तो कैसे बनाया, ये सीखने जा. ठीक है, स्टार्स बने कैसे हैं बच्चे, ये प्रक्रिया हम लोग सीखेंगे. एंड आई हैव जस्ट टेकन 1 billionth part of this gaseous nebula from the galaxy on the next page so that I can explain the star's life, and the next topic which we are going to discuss is life of the star. And the first means beginning of the star is with embryo star. So what exactly this embryo star and how it was formed? So this is gaseous nebula which was actually getting condensed day by day. Why condensed? Because this is the core area. You can consider it as a core area, and this is what outer gaseous nebula, outer gaseous cloud. You can consider it outer gaseous cloud. This is outer gases, and here it is the core of the star. Fine. Now what happened? This one star means एक sun बनने जा रहा है, तो mass कितना होगा बच्चे इस gaseous nebula? It was means hot, but not so much hot, but हाँ, initially there was a hot gaseous nebula, but the core is what? Dense, hence the gravity is continuously crushing the core. तो चारों तरफ से gravity क्या कर रही है बच्चे? core को दबा दे रही है. So first thing you will note down the gravity start crushing the core. Crushing the core. अब जरा कोर में क्या है देखते हैं. Suppose that this is the core of the star containing hydrogen and helium, and it is crushed by gravity from all sides. So what will be there? The core becomes smaller and smaller. core छोटा होता चला जाएगा और dense होता जाएगा, होगा ना? And due to that, hydrogen and helium atoms start colliding. This is the core, and inside the core, because of contraction, hydrogen and helium starts colliding with each other. पहली बात, गैसियस नेबुला ग्रेविटी से कोर को दबाना शुरू करेगी. कोर छोटा होता जाएगा, छोटा होगा तो उसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो रैंडम मूवमेंट करते ही रहते हैं बच्चे. जब छोटा होगा तो उनके मूवमेंट में दिक्कत होगी, एंड दे स्टार्ट कोलाइडिंग विथ ईच अदर, एंड एज अ रिजल्ट collision started. As a result, what happened? Temperature start increase. Temperature of the core start increase. कोर का टेम्परेचर बढ़ने लगा. आप समझिए इस बात को. क्यों बढ़ रहा है बच्चे? बिकॉज कोलिजन किस में हो रहा है बच्चे? हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स. हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम्स start colliding with each other.
अच्छा, ग्रेविटी चुप हो जाएगी क्या? उत्तर है नहीं, और क्रश करेगी. सो मोर कोलिजन एंड टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग एंड consequently temperature raised up to the order of 10 to the power 7 डिग्री सेंटीग्रेड. 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर स्टैब्लिश हो जाए. और इस 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे एक रिएक्शन होना शुरू हो जाता है बच्चे, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन get established in the core. Nuclear fusion reaction get established in the core. What is going on in the nuclear fusion reaction? Hydrogen, two small nuclei of hydrogen at very high heat, temperature is high, so heat is there, fuses to form helium, and in the process, energy is released. Energy is released. And how much temperature is needed? 10 to the power 7 degrees centigrade. And when this core start fusing, so core start releasing energy. core से क्या होना शुरू हो जाएगा बच्चे? ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाएगी. So the core start releasing energy. This is the core, and outside this core we have outer gaseous cloud, which is made up of hydrogen and helium. Hydrogen and helium. But now what happened? This energy which is being released from the core illuminate the entire gas, and this is the beginning of embryo state. So this energy that is coming out from the core illuminate the entire gaseous cloud. This is nothing but gaseous cloud. Gaseous cloud. And what is it? This is the core of the star where the fusion reaction gets established. And this is nothing but radiation. Radiation start coming out from the core, and nuclear fusion reaction get established, in which hydrogen fusing into helium and energy is released. And this energy comes out in form of radiation, and this radiation illuminates the entire gaseous cloud. अब सारा का सारा गैसियस क्लाउड जब चमकना शुरू करेगा तो इसी को आप क्या कहते हैं बच्चे? प्रोटो स्टार, प्रोटो सन, और वी कॉल इट एम्ब्रियो. एम्ब्रियो एक एम्ब्रियो स्टार. इज इट अंडरस्टैंडेबल? तो एक बार इसे बना लें चित्र और लिख. समझ में आ गया जी प्रोटोस्टार कैसे बना? मैं फिर से बताता हूं. ये आउटर गैसियस क्लाउड जो है
ग्रेविटी के कारण सेंटर की तरफ जाना शुरू करेगा, क्योंकि सेंटर इज डेंस, which is what core, and under this massive gravity this core get crushed. So here the bigger core, this is a smaller core. As the core get crushed, what happen after? Hydrogen and helium atoms start colliding with each other, and continuously this core becomes smaller and smaller. That's why more collision, and due to that heat is released and temperature start rising. And this temperature reaches to 10 to the power 7 degrees centigrade. And this is a very peculiar temperature at which there is a reaction which gets established, which is called as nuclear fusion reaction. Okay. And in nuclear fusion reaction, a small hydrogen, two nuclei of small hydrogen at temperature 10 to the power 7 degrees centigrade fuse to form helium. In the process, energy is released. And this released energy radiate through the gaseous cloud and illuminate entire gaseous cloud. And that is what the birth of a star, which is called as protosun or embryo star. Is it okay to everyone? बताइए. Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन किसी को? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन समझ में आया बच्चे? Yes, What sir. is required for nuclear fusion reaction? Temperature of the order 10 to the power 7 degrees centigrade. So there will be nuclear fusion reaction. Nuclear fusion reaction get established. ठीक है? और ये हर तारे पे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है. The stars are what? They are producing light. They produce light, and this light is basically produced because of this fusion reaction. And in these stars, hydrogen is the fuel. Hydrogen is the fuel. याद रखिएगा. हाइड्रोजन फ्यूजन से एनर्जी रिलीज होती है. दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज अ फ्यूल. और बाकी के जो फ्यूजन होंगे उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि एनर्जी कंज्यूम होती. सो हाइड्रोजन जब तक स्टार में रहेगा तब तक स्टार चमकता रहेगा, उसके बाद स्टार खत्म हो जाएगा. सो अब एम्ब्रियो स्टार हो गया. अब क्या होगा बच्चे? ये एम्ब्रियो स्टार फिर मैच्योर स्टार फेज में जाएगा. सो व्हाट इज मैच्योर स्टार? जैसे हमारा सूरज, आपने देखा है ना मैच्योर स्टार को. सो द फ्यूजन रिएक्शन गेट एस्टेब्लिश्ड इन एंटायर कोर इन सच अ वे. This fusion reaction get established in entire core in such a way that the radiation which is coming out from inside, is going to balance the gravity of outside gaseous cloud. There is an equilibrium between the radiation and the gravity. So what happened? The star is neither expanding nor star is getting small, and continuously releasing the radiation and illuminating the entire universe as well as its solar system. So there is a continuous emission of light from this star, and one equilibrium is also established that the radiation from inside is going to balance the gravity from outside. Gravity from outside. अंदर से इतना रेडिएशन आए कि बाहर की ग्रेविटी को वो मेंटेन कर दे, तो क्या होगा बच्चे? स्टार is going to have definite shape and size. So the size is going to be what? Constant. So there is a constant size. Obviously shape to spherical hoga, but size is constant because radiation equilibrate
the gravity, balances the gravity. तो लिख लीजिए, mature star, fusion reaction get established, fusion reaction get established in entire core and the radiation balances out, and the radiation balances out the gravity, so that star achieves constant size and illuminating the universe, we call it mature star. फिर आप क्या कहेंगे इसे? मैच्योर स्टार कहेंगे। ठीक है बच्चे, so we call it mature star. For example, we have our sun, we have dog star, Polaris. These are the example of our solar means our Milky Way. हमारी जो गैलेक्सी का नाम है वो मिल्की वे है, Milky Way. Fine. So this is our galaxy in which sun is there. So this is what mature star. So what is mature star? फ्यूजन रिएक्शन कोर में इस तरह से हो कि अंदर से रेडिएशन बाहर की ग्रेविटी को बैलेंस कर दे और स्टार एक डेफिनिट शेप में हो जाए, साइज में हो जाए, उसकी साइज में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ना हो रहा हो, तो उसे मैच्योर स्टार फेज कहते हैं। और उससे ऊर्जा निकल के पूरे ब्रह्मांड को और उसके सोलर सिस्टम को इल्यूमिनेट करे। सो दिस इज व्हाट मैच्योर स्टार फेज। अब क्या होगा बच्चे, ये मैच्योर स्टार फेज कब तक रहेगा? जब तक कोर में हाइड्रोजन रहेगा और हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होता है। जैसे ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो रेडिएशन निकल रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जैसे ही कोर का हाइड्रोजन, आप इमेजिन करिएगा, खत्म हो, सो दिस इज कोर, और जैसे ही कोर का हाइड्रोजन खत्म होगा, इससे निकलने वाली रेडिएशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी बच्चे, है ना। और जब रेडिएशन कम हो जाएगी तो जो बाहर की आउटर गैसियस क्लाउड है उनकी ग्रेविटी रेडिएशन से ज्यादा हो जाएगी, तो आउटर गैसियस क्लाउड फिर से क्या होने लगेंगे? इस कोर के पास आना शुरू करेंगे। सो अंडर ग्रेविटी, नाउ ग्रेविटी विल ओवरपावर because from inside radiation is not coming. Why radiation is not coming? All the hydrogen, this is not all, almost all the hydrogen of the core get fused into helium. All the hydrogen get fused, almost all the hydrogen, almost रखिएगा, all मत कहिएगा, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन आज भी है, मतलब कहीं भी जहां वो तारे आज सुपरनोवा हो चुके हैं, व्हाइट ड्वार्फ हो चुके हैं, उसमें भी हाइड्रोजन है, बट abundance of hydrogen is what? Most of hydrogen is fused to helium. So in this case, you can easily see that radiation is weaker. Radiation is what? Force generated by radiation is what? Less. And gravity overpower radiation.
अब जब ग्रेविटी ओवर पावर करेगी तो आउटर गैसियस क्लाउड को कोर की तरफ ले जाके इकट्ठा करने लगे. So the situation is like this. The outer gaseous cloud, just let me show this outer gaseous cloud over here. So this is something that we can say outer gaseous cloud. So dense outer gaseous cloud start accumulating near the core. Here it is the core. This is core. And core is at very high temperature. Core, it is already at very high temperature, 10 to the power 7 degrees centigrade. So this is dense gaseous cloud accumulated near the core, accumulated near the core. Why accumulated? क्योंकि ग्रेविटी ओवर पावर हो गई. किस पर? रेडिएशन पे. क्यों? क्योंकि अंदर से रेडिएशन कम निकलना शुरू किया. क्यों कम निकला बच्चे? क्योंकि अंदर फ्यूजन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन फ्यूज हो रहा था वो कंप्लीट हो गया और लगभग सारा का सारा हाइड्रोजन खत्म. तो गैस आके कोर के आसपास इकट्ठी हो जाएगी. अच्छा, इस गैस में है क्या क्या? हाइड्रोजन है ज्यादा और हीलियम है. अब जब ये कोर के आसपास इकट्ठी होगी बच्चे, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर कोर, नियर बाई गैसेस गेट heated up and fusion reaction get established. Nuclear fusion reaction. Nuclear fusion reaction get established. Nuclear fusion reaction get established in entire gaseous cloud. पूरे गैसियस क्लाउड में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाएगा. एक छोटे से कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ था तो ये तारा क्या बना था? मैच्योर स्टार. जब इस डेंस क्लाउड में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू होगा तो दिस स्टार स्टार्ट एक्सपैंडिंग इनटू अ ह्यूज स्टार of several thousand bigger than the original size, and we call it red giant phase. Red giant phase. So red giant is what the next stage, which is what coming after the mature star phase. Red giant. अगर सामान्य तारा है तो रेड जाइंट, और बहुत बड़े तारे हैं तो उसको हम सुपर रेड जाइंट कहते हैं. सुपर रेड जाइंट. बनने की स्थिति एक जैसी. बड़ा तारा होगा तो भी कोर का हाइड्रोजन खत्म होगा. समझ पा रहे? फिर से समझा रहा हूं. ये समझ आया कि नहीं? हाउ द मैच्योर स्टार गेट ट्रांसफॉर्म इनटू रेड जाइंट. बताइए. समझ आया सर. Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है. पक्का ना? हाँ सर. ठीक. सो रेड जाइंट फेज कैसे बना, एक बार रिवाइज कर देता हूं. समझ लीजिएगा. मैच्योर स्टार का हाइड्रोजन खत्म. हाइड्रोजन खत्म होगा तो, अच्छा पूरा हाइड्रोजन नहीं खत्म होगा, ऑलमोस्ट ऑल. तो फ्यूजन रिएक्शन होना धीरे धीरे कम हो जाएगा. रेडिएशन कम निकलेगी, लेकिन ग्रेविटी क्या होगी? ग्रेविटी तो उतनी ही है. सो ग्रेविटी ओवर पावर रेडिएशन and the outer gaseous cloud start approaching towards the core under the massive gravity, and core is at very high temperature already. भाई स्टार का कोर रहा है. So near vicinity the gases
of outer gaseous cloud get warmed up and the temperature reaches to 10 to the power 7 degrees centigrade. This is the temperature at which nuclear fusion reaction get established successively in entire gaseous cloud, and huge amount of radiation start in releasing from here, and this star get expanded to new phase that is called as red giant phase. If the star is a smaller or average size star, average size, then we call it red giant. If the star is massive or big star, giant star, we call it super red giant. प्रोसेस एक ही है, नाम अलग अलग है. सुपर रेड जाइंट ऑब्वियसली उसका आकार और बड़ा होगा, सुपर रेड जाइंट. दिस इज टर्मिनोलॉजी व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड. यानी हमारा सूरज भी कभी रेड जाइंट बनेगा क्या? हाँ. और जिस दिन सूरज रेड जाइंट बना उस दिन अर्थ पे लाइफ नहीं रह जाएगी, क्योंकि रेड जाइंट बनते ही ये अपने आकार का हजारों गुना एक्सपेंड होगा और ये मरकरी, विनस, अर्थ और यहां तक कि मार्स तक कहते हैं इसके फ्लेयर्स पहुंचेंगे, और ये सारे ग्रह जो है सूरज के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे और तब कुछ भी नहीं बचेगा. नो लाइफ विल बी देयर. दिस इज द रेड जाइंट फेज ऑफ सन, and there will be no life left on the earth. Our sun will also go for red giant once the hydrogen get converted into helium. But yes, अभी टाइम काफी बचा हुआ है. It takes almost 6.3 billion years from today when sun will be in the red giant phase. 6.3 billion years from today. Fine. सन तब रेड जाइंट फेज में होगा एंड नथिंग विल बी लेफ्ट ऑन द. ठीक है बच्चे. अब इसे रेड क्यों कहते हैं और इसे जाइंट क्यों कहते हैं? सो रेड एंड जाइंट. सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड एंड जाइंट? सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज जाइंट, बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज साइज. ह्यूज साइज है ना बच्चे? साइज बहुत बड़ी है इसलिए आप इसको जाइंट कहते हैं. रेड क्यों? क्योंकि ये रेड दिखता है. इट लुक्स रेड, लुक्स रेड. अब ये क्यों रेड दिखेगा बच्चे? क्योंकि जो हीट है इसमें रिलीज हो रही है वो एक बहुत बड़े वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट. दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द रेड जाइंट एंड दिस इज द हीट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ ह्यूज वॉल्यूम. तो जब हीट को बड़े वॉल्यूम में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उससे जो निकलने वाला प्रकाश होता है वो लो एनर्जी का होगा. लो एनर्जी. लो एनर्जी का प्रकाश कैसा दिखता है? लो एनर्जी का प्रकाश रेड दिखता है. आपने सुना होगा ना, देयर इज अ व्हाइट लाइट. दिस इज द व्हाइट लाइट which is made up of how many color? 7 colors. 7 color: violet, indigo, blue, green, yellow, V, I, E, G, Y, O, and Vib. So this is white light. Violet is what? High energy. High energy. And what about red? Up to here we have low energy. तो जब कोई तारा वायलेट या इंडिगो दिख रहा है इसका मतलब उसमें हीट बहुत ज्यादा है ना? लेकिन जब कोई तारा कम हीट मतलब कम हीट पर यूनिट वॉल्यूम शो कर रहा है तो वो रेड दिखेगा बच्चे. ऐसा नहीं है कि हाँ हीट कम है, हीट ज्यादा है, बट वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि पर यूनिट वॉल्यूम हीट कम है. पर यूनिट वॉल्यूम देयर इज लेस हीट. तो ऐसा तारा जिसके पर यूनिट वॉल्यूम में लेस हीट होगा वो कैसा दिखेगा? लो एनर्जी का दिखेगा, और लो एनर्जी का तारा रेड दिखता है. दैट्स व्हाई इट हैज बीन गिवन द नेम रेड जाइंट. एंड यू नो white light is made up of 7 colors, and these 7 colors are arranged
on the very basis of their wavelength. Here we have 400 nanometer wavelength, and here we have 700 nanometer wavelength. और ज्यादा छोटा wavelength, that means high energy, and बड़ा wavelength, that means low energy. लो एनर्जी, तो लो एनर्जी कब दिखेगी? जब कोई तारा रेड दिख रहा हो, इसका मतलब वो लो एनर्जी उसकी दिखाई पड़ रही है, वो बहुत दूर है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रेड जाइंट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड। अब रेड जाइंट का भी तो अंत होगा। अब रेड जाइंट बन चुका है बच्चे, अब रेड जाइंट के बाद क्या बनता है ये डिपेंड करता है उसकी साइज पे। अगर बड़ा तारा है तो आफ्टर रेड जाइंट it if a star is a smaller, if it is a small star, so there is a case of planetary nebula stage. The star will be transformed into planetary nebula stage, in which you will find the core will be there, but the outer gaseous cloud disintegrated, outer gaseous cloud disintegrated and scattered here and there, and this outer gaseous cloud is what called as planetary nebula. Fine. Although you can compare it as a miniature form of supernova. It's a miniature form of supernova. Supernova explosion. So it's a planetary nebula. This is what outer gaseous cloud. Outer gaseous cloud and planetary nebula, and this core comes out in form of white dwarf. White core comes out in form of white dwarf. After red giant, if star is a smaller star, then it will follow a miniature supernova, or you can say disintegration in form of this planetary nebula, and there is formation of white dwarf, and this white dwarf later on turn into black dwarf. Black dwarf. But if this star is massive, bigger star, so it will form super. So it will undergo supernova explosion. बेसिकली बड़े तारे में जो एक्सप्लोजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मैसिव होता है, इसलिए उसको सुपरनोवा कह देते हैं। और छोटे तारों में ये एक्सप्लोजन बहुत छोटा होता है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट जस्ट लाइक, इट्स नॉट सुपरनोवा, बट इट इज जस्ट लाइक सुपरनोवा explosion, and the outer gaseous cloud is scattered in form of planetary nebula. So smaller star के इस सुपरनोवा को हम planetary nebula stage के नाम से जानते हैं. So this is what planetary nebula stage, and in which outer gaseous cloud comes in form of, this core comes in form of white dwarf. ये छोटे तारे जैसे हमारा सूरज है, sun. So it will get transformed after red giant phase. It will be transformed into planetary nebula, है ना? But if bigger star is there, so it will go for supernova explosion, and after supernova it will form neutron star. Neutron star, and this neutron star get engulfed into the master black hole. Master black hole जो सेंटर में है उसमें ये समा जाएगा, जिसमें ब्लैक ड्वार्फ भी समाप्ता है, न्यूट्रॉन स्टार भी अंत में नहीं चला जाएगा. सो सुपरनोवा एक्सप्लोजन कब होगा? बड़े तारों में होगा. और छोटे तारों में क्या होगा बच्चे? There will be supernova explosion type of miniature explosion, and it will be transformed into planetary nebula stage, and it form white dwarf. कब ये white dwarf बनाएगा, कब ये न्यूट्रॉन स्टार बनाएगा, इस बारे में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक बात बताई थी. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर,
And he said, if the size is less than 1.44 solar mass. If the size is less than 1.44 solar mass, तो तारा क्या बनाएगा बच्चे? Less than 1.44 solar mass, so it will undergoes planetary nebula stage and it will form white dwarf followed by black dwarf. But if it is more than 1.44 solar mass, the size of a star is more than 1.44 solar mass, so it will form, after supernova, it will form neutron star. After supernova, it will form neutron star. Fine. And there is one more condition is there. If the star is massive star, and the core of the star is of 3 solar mass. Core of the star is 3 solar mass, then the star is going to form, get converted into neutron star. And this neutron star into black hole, small black hole, and this black hole get engulfed to the master black hole. तो कब होगा ऐसा? जब स्टार बहुत बड़ा हो बच्चे कि उसका कोर 3 सोलर मास, कोर का मास कभी भी 10 to 20% ऑफ टोटल सोलर मास से ज्यादा नहीं होता. यानी 3 सोलर मास का अगर कोर होगा तो 20%, 10% अगर मान लो तो तारे का द्रव्यमान कम से कम 30 सोलर मास होना चाहिए, है ना? 30 सोलर मास, 20% है तो 60 सोलर मास. समझ पा रहे हो? 10 to 20% मतलब 15 सोलर मास. तो ये तारे का द्रव्यमान होना चाहिए. कोर का द्रव्यमान कितना है? 10 to 20% ऑफ total star's mass. And here it will form neutron star, and this neutron star turn into black hole, tiny black hole, and this tiny black hole into master black hole. These are the cases. After red giant phase, there will be supernova. There will be formation of white dwarf, black dwarf, or neutron star. It depends upon the situation. It depends upon the size of the star. If it is going to be less than 1.44 solar mass, so it will undergo planetary nebula stage and it forms white dwarf that turn to be black dwarf and engulfed in the black hole. If it is of more than 1.44 solar mass, so there will be an explosion, massive explosion, and that we call supernova. And after supernova, it will form neutron star. But there is one more case. If there is a massive star whose core is more than 3 solar mass, so after supernova, it will form the tiny black hole. This is the case which is actually described by Subramanian Chandrasekhar. Subramanian Chandrasekhar. Is it okay to everyone? Sir, what is 4 to 20%? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही बेटे. Sir, what is the core 10 to 20%? Let me explain. Okay. This is a star. Fine. Suppose that a star, this entire star is of 100 kilogram. So there is a core also where the fusion reaction is going on. So this is total mass of the star. Total mass of the star कितना है? 100 kilogram. I'm just citing example. 100 किलो कोई तारा नहीं हो. So what will be the size of core?
core will be hardly 10 to 20% of total mass. टोटल मास का 10 to 20% ही कोर होता है, जो आगे आप देख पा रहे हैं, है कि नहीं? सो तारे का साइज बहुत बड़ा होता है, कोर उसका छोटा है, एक रेमिनांट बचा हुआ। अब अगर कोर 3 सोलर मास का है बच्चे, 3 सोलर मास, तो मान लो अगर 3 is what 10% of something, so what will be the total mass? Total mass will be 30 सोलर मास। यानी तारा कितना बड़ा होगा? सूरज से कई गुना बड़ा, 30 सोलर मास। If the star is massive, then what happened? It will be degenerated. It will be degenerated. If this is the case, core is of 3 solar mass, so it turned into tiny black hole. Tiny black hole. Is it okay to everyone? What is the meaning of core? हमारा सूरज है ना, सन, 1 सोलर मास का है, 1 सोलर मास। तो जब ये रेड जाइंट बनेगा तो इसका कोर जो होगा 0.2 सोलर मास का होगा। The core of sun will be of 0.2 solar mass. This will be the core. ठीक है? सो अगर कोर लेस देन 1.44 सोलर मास है, 1.44 सोलर मास से छोटे कोर बने हैं, तो क्या बनेगा? व्हाइट ड्वार्फ बनेगा बच्चे, व्हाइट ड्वार्फ। लेकिन अगर इससे बड़ा कोर है, मोर देन 1.44 सोलर मास, तो क्या बनेगा बच्चे? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन स्टार। अगर ये कोर की साइज 3 सोलर मास से ज्यादा है, तो क्या बनेगा बच्चे? इट विल फॉर्म टाइनी ब्लैक। इज इट ओके टू एवरीवन? बताइए। चंद्रशेखर लिमिट समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, छोटे तारे प्लेनेटरी नेबुला फेज में होंगे। प्लेनेटरी नेबुला फेज इज आल्सो अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजन व्हिच वी कांट से सुपरनोवा, क्योंकि वो उतना एक्सप्लोसिव नहीं हो, लेकिन एक्सप्लोजन तो होता है। ठीक है बच्चे? सो चंद्रशेखर लिमिट, आप चाहें लिखना तो लिख लें, चंद्रशेखर शेखर लिमिट। It talks about the latter phase of stars life. Stars, when stars are smaller stars, that means less than 1.44 solar mass. Smaller stars जिसका कोर, याद रखिएगा, this is 1.44 solar mass is size of the core, less than 1.44 solar mass, then it will undergo planetary nebula phase, and the core comes out in form of white dwarf, and that get cooled to form black dwarf. And this black dwarf get engulfed in the master black hole. Okay. Small star, smaller star. But if it is giant star, what does it mean? When it is more than 1.44 solar mass, the core size is more than 1.44 solar mass. तो obviously तारा कितना बड़ा है आप देख सकते हैं, 1.44 solar mass. So it undergoes supernova. इसका प्लैनेटरी नेबुला सुपरनोवा कहलाता है, explosion
And because it is of massive gravity, so the core is not transformed into atomic white dwarf stage, rather it transforms into neutron star, and this neutron star engulfed into black hole. And there is another case of very giant star, massive supergiants, जिनके कोर की साइज कितनी हो, core has much greater than 1.44. It is 3 solar mass. 3 solar mass. Then what happened? There will be, after red giant phase, there will be supernova. Obviously ये red giant नहीं होगा, ये super red giant होगा. Super red giant, there will be supernova. And after supernova, it will form a transient neutron star, and then it transform into tiny black hole. और ये tiny black hole कहाँ जाएगा अंत में? In the master or central black hole. Is it okay? So is it understandable? चंद्रशेखर लिमिट ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर लिमिट. और इस कंट्रीब्यूशन के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को he was rewarded 1983 Nobel Prize for Physics. So Chandrasekhar, is it fine to everyone? Chandrasekhar, ठीक है बच्चे. सो आइए सीख लेते हैं व्हाइट ड्वार्फ क्या है, ब्लैक ड्वार्फ क्या है, ये समझ लेते हैं. तो जब रेड जायंट फेज बन रहा था, रेड जायंट फेज के बाद कोर बाहर निकला, तो दिस कोर वाज एक्चुअली इनसाइड द कोर. व्हाट वाज गोइंग ऑन? हीलियम गेटिंग फ्यूज्ड इनटू अदर हेवी एलिमेंट्स. हीलियम का फ्यूजन चल रहा था हेवी एलिमेंट्स. Helium, it get fused into other heavy elements. So helium getting fused into other, ये hang कर जा रहा था, other heavy elements. So this is what successive fusion reaction which is going on. क्या हो रहा है बच्चे इसमें? I'm trying to write over here. There is continuous fusion of helium into heavy element. Heavy element like lithium, carbon, nitrogen, oxygen, so on and so forth. And this process is going on up till heavy elements like iron, nickel, cobalt, etc. This is what we call successive fusion reaction. So how these heavy elements were formed? Because of this successive fusion reaction. और इस फ्यूजन रिएक्शन से हेवी एलिमेंट्स बने. अच्छा, this is the core of the star, where the fusion reaction is going on and helium getting fused into other heavy elements. And do remember, this heavy element formation is energy consuming process, but still this core has residual heat, so it releases heat.
इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो यहां से लगातार रेडिएशंस निकल रहे, कंटिन्यूअसली इट इज रेडिएटिंग हीट in form of light. No? So radiation is coming out because it has a residual heat. तो residual heat से जो radiation निकल रहे हैं उससे ये core illuminated है, और core illuminated है तो दिखाई पड़ता है, that's why it is visible. This is what radiation, and this radiation is because of this residual heat. क्यों residual heat? क्योंकि this is the core of the star ना, core of the star. Some point of time यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा था। जैसे आप तवे को गर्म कर दो रोटी बनाने के लिए और गैस बंद भी कर दो तो भी तवा गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिडुअल हीट है। तो उस रेजिडुअल हीट से लगातार रेडिएशंस निकल रहे होते हैं बच्चे। ये लाइट निकलती है तो दिखती है, दैट्स व्हाई इट इज विजिबल। ये विजिबल है इसलिए इसे कहते हैं वाइट, और साइज इसकी छोटी है इसलिए कहते हैं ड्वार्फ। So this is white dwarf. It is nothing but the core of the small star, which is visible because of radiation of light. And this radiation is coming from residual heat, which is actually part of this core, become part of this core at the time of fusion reaction. And not only this, helium is getting fused into other heavy elements. ठीक है बच्चे? तो ये रहा व्हाइट ड्वार्फ। अब धीरे धीरे क्या होगा, व्हाइट ड्वार्फ धीरे धीरे कूल होता जाएगा, इट गेट कूल एंड दिस हेवी एलिमेंट्स आर गेटिंग फॉर्म्ड एंड मोस्ट ऑफ द कार्बन्स आर, मोस्ट ऑफ इट वेर carbon formation have taken place and entire residual heat get exhausted. Then what happened? It turned into a totally, what you can say, invisible structure that we call black dwarf. That we call black dwarf. Right? So why it is called as black dwarf? Because it is not visible. It is not visible. ये ड्वार्फ जो है बदमाशी कर रहा है। So this is your black dwarf, white dwarf get cooled, और जब कूल हो जाएगा बच्चे तो ये दिखाई पड़ेगा, सारी लाइट तो निकल गई, रेडिएशन निकल गई। So what is white dwarf? White dwarf is a cooled black dwarf. After so many years, it may take millions of years, obviously, it becomes black dwarf. Black. So it is made up of heavy elements. Answer is yes. Heavy element. And is it visible? Answer is they are not visible. Not. Okay. So that's why not visible. इसलिए क्या कहते हैं? Black and white dwarf because smaller in size. तो ये छोटे होते हैं और अंत में ये ब्लैक ड्वार्फ कहाँ चला जाएगा? ये देखो संयोग से सेंट्रल ब्लैक होल भी बना रखा है इसके लिए। So this is the master black hole. Master black hole. Okay. So this is the story of smaller star, white dwarf, black dwarf. What will be the story of large star? There will be red giant or super red giant. After that, there will be supernova. And after supernova, the core of the star comes out. And this core is very massive. So this core of giant star. And this core of giant star comes out and under massive gravity, काफी बड़ा core होगा बच्चे, under massive gravity, the core, which is made up of atom, crushed into nuclei.
सारे एटम को क्रश करके उनके न्यूक्लियस के फॉर्म में बदल दिया जाएगा। आप सबको पता है बच्चे, एटम बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें एब्जॉर्ब करा दिए जाएंगे और छोटे छोटे न्यूक्लियस से बना होगा न्यूट्रॉन स्टार, क्रस्ड इनटू न्यूक्लियाई, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, and this release the radio pulses, hence also called as pulsating star, pulsating star। ठीक है बच्चे, या इसको पल्सर भी कहते हैं। बहुत छोटे होते हैं पल्सर, है ना। व्हाइट ड्वार्फ से भी छोटे, क्योंकि ये किसके बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो कहा जाता है कि अगर अर्थ को हाइपोथेटिकली न्यूट्रॉन स्टार में बदल दिया जाए तो कितनी बड़ी होगी बच्चे, इट इज अ लिटिल बिट बिगर देन द टेनिस बॉल। साइज कितनी होगी उसकी, टेनिस बॉल से थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मास कितना होगा, इट इज इक्वल टू अर्थ, अर्थ के बराबर ही। यानी उस बॉल को आप उठा नहीं सकते, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, बट साइज वॉल्यूम ड्रास्टिकली छोटा हो जाएगा। तो आपने ध्यान से देखा होगा, जब मैंने मैसिव स्टार बनाया था किस पे, गैलेक्सी में दिखाने के लिए, तो उसका न्यूट्रॉन स्टार कितना छोटा बनाया था, याद है क्या। ये देखिए, ये है सुपर जाइंट्स, सुपर जाइंट्स जो क्या बनाएंगे, न्यूट्रॉन स्टार। और इसके न्यूट्रॉन स्टार देखिए कितने छोटे, मच स्मॉलर देन द व्हाइट ड्वार्फ एंड ब्लैक। सो इज इट ओके टू एवरीवन, स्टेजेस ऑफ अ स्टार्स लाइफ इज फाइन, बताइए भाई। नो, स्टेजेस ऑफ स्टार लाइफ इज ओके टू एवरीवन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए, ये नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ, आज क्लास यही रुकती है, फिर कल इसके आगे की कहानी, सोलर सिस्टम और फिर छोटी छोटी चीजें, और फिर कल फिर अल्टरनेटिव पे क्लास रहेगी बच्चे। टुमारो विल नॉट बी द क्लास, एंड द डे आफ्टर टुमारो, यानी कल 16 हो जाएगी, हम लोग 17 को फिर मिलेंगे, 17th of August at the same time। Sir, in which And group the whatever I'm, notes are sharing? क्या चीज बेटे, सर किस ग्रुप में सब शेयर किया जा रहा है नोट्स? ये ग्रुप आप ज्वाइन नहीं कर पाए क्या। नहीं सर, व्हाट्सएप में आपको मैसेज किया था, आपने जो बोला था तो नाम और व्हाट्सएप पता। पे मैंने भेजा है आपको, आप वो ज्वाइन कर पाए क्या। नो सर। तो आपको जो लिंक भेजा है व्हाट्सएप में ना, उससे आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, या अभी आप भेजिए मेरे पास मैसेज, मैं आपको सर वो मैंने आप कल भेजा था आपको व्हाट्सएप में, आप आपसे कोई रेस्पॉन्स? हाय और लिखिए, हो सकता है बहुत बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना बच्चे। ओके सर। तो मैं और आपको एक बार लिंक भेज दूंगा। सर मैं आपको और एक बार मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप में। जी जी, कर दीजिए। ठीक है सर। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।